Assalamu alaikum. Welcome to the Higher Education Academy for Physics Lecture Part 1 Chapter 3. न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आज हम स्टडी करेंगे। न्यूटन के 3 लॉ हैं मोशन के बारे में। पहला लॉ, फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि हमारे पास कोई भी चीज़ रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर वो मोशन में है तो वो यूनिफॉर्मली मोशन में रहेगी, अनलेस एन एक्सटर्नल और अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन इट। जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाए तब तक वो रेस्ट में रहेगी या यूनिफॉर्मली मूव करेगी। अ बॉडी इज एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट और मूविंग with uniform velocity continuous to do so unless an external force acts on it। इसके अलावा इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? resist any change, रेस्ट मोशन में और मोशन रेस्ट में। मतलब किसी बॉडी को रेस्ट में है तो उसको हम अब धकेल दें या फोर्स लगा दें तो वो मूव कर जाएगी, अगर मूव कर दे तो उसको स्टॉप करवा दें तो हम कहते हैं ये इनर्शिया है। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि एक बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है तो वो फोर्स हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसकी मास के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी उसके एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। If a force applied on a body of mass m produces an acceleration in the direction of force that acceleration is directly proportional to the force and inversely proportional to the mass of the body। जब हम कहते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, इसको हम लिखेंगे F is directly proportional to A/m, so the acceleration is directly proportional to F then A is equal to K/F/m, sign of proportionality, constant of proportionality। देन K की वैल्यू क्या हमारे पास 1, A is equal to 1/F/m
F इज इक्वल टू एम ए। इसके बाद आता है हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ मोशन। Every action has a reaction, has a but opposite and equal। मतलब न्यूटन थर्ड लॉ बताता है हमारे पास कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है मगर अपोजिट एंड इक्वल होता है।